Hello students, do you know what is a dramatic monologue? If the answer is no, so guys listen carefully. Actually dramatic monologue is a form of poetry. यानी कि in poetry we see and we go through the dramatic monologue. What we see here, a single speaker is there. It might be said, it might be taken as a self talk, and also we see here monologue means something presented, some emotions, the deep emotion presented by a single speaker. And if we see the dramatic, it means it would be presented in the form of a drama. So dramatic contents would be there. So this is the dramatic monologue. If you see the master of this, it was Robert Browning. Also, Alfred Tennyson has written some dramatic monologues and other people also. But we see here at the apex, it is the Robert Browning. Guys, we see the best examples, My Last Duchess, one of the finest example of dramatic monologue by Robert Browning. Also, we see some others like Love Songs of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. Also, we see Dover Beach by Matthew Arnold. So, these are the best examples of dramatic monologues. So, guys, let us explore it more. Let us have some questions based on dramatic monologue and others. Yani we are just going towards the drama and its forms. So, here we go. The very first question, guys, we see Empedocles on Etna is written by. So Empedocles on Etna was written by Swinburne, Matthew Arnold, Byron और टेनिशन. सो गाइज इसका आंसर हमारा क्या होगा? मैथ्यू आर्नोल्ड. तो आंसर हमारा बी बनेगा. फ्रॉम द इंपॉर्टेंट वर्क बेसिकली वी सी हियर एम्पेडोक्लेस had been there in the volcano. So he had flung in the volcano. So that was the Empedocles. Next question we see here, Coleridge A Christmas Tale is written in the imitation of one of the Shakespeare's romances. Which of the following romances was there? So guys यहाँ पे देखते हैं The Tempest is there, Winter's Tale, Cymbeline या फिर Pericles. So आंसर इसका करेक्ट जाएगा The Winter's Tale. तो बेसिकली कॉलरिज का जो वर्क था अ क्रिसमस टेल, इट वाज द इमिटेशन ऑफ द विंटर्स टेल. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. Shelley took the theme for his Prometheus Unbound from a play on the same theme written by Greek dramatist. So who was that Greek dramatist? वो basically Greek dramatist कौन था? Guys मैं बता देता हूँ आपको Prometheus Unbound की कि Prometheus had been jailed just because of giving fire to the humankind. And GS gave him the punishment to be behind the bars, behind the jail. So that was Prometheus Unbound. But the theme have been taken from Sophocles, Euripides, none of these या फिर Aeschylus. So answer हमारा बच्चों जाता है यहाँ पे C. Aeschylus was there. So Aeschylus, if we see, is the right answer here. Let us go for the next question. Atlanta in Caledon. It was written by. तो हम यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस हमारे पास है, स्वाइनबर्न, लेहन, टेनिशन एंड मिस मिटफोर्ड. So guys, it is Swinburne. So Swinburne is the correct answer for the Atlanta in Caledon. Next question we see here. Who is the author of the play The Promise of May? Less known work है, but still जबरदस्त लिखा गया है by Browning. It is Browning, Tennyson, Swinburne and it is Lehan. So guys देखिए जरा इसका आंसर हमारा क्या बनेगा. The Promise of May. So, सब बच्चे देखिए ध्यान से आंसर क्या बन सकता है क्वेश्चन नंबर 165 का. तो ये बच्चों हमारा टेनिशन बनेगा. ब्राउनिंग टेनिशन में हमें थोड़ा सा देखना हो सकता है, बट ये आंसर हमारा एल्फ्रेड टेनिशन होगा. तो एल्फ्रेड टेनिशन इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इज रिटन बाय टेनिशन? चार ऑप्शंस आपके पास में, प्रोस्पाइस, एवलिन होप, टिथोनस एंड गाइस बिशप ब्लोग्राम्स एपोलॉजी. तो इसमें अगर हम आंसर देखें ये आपका सी बनेगा. टिथोनस इज देयर. सो टिथोनस इज द करेक्ट आंसर फॉर द ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिशन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग इज रिटन बाय ब्राउनिंग? एंड्रिया डेल सार्टो, मॉड, लॉक्सले होल या फिर यूलिसिस? करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे? लॉक्सले होल. तो सी इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफो? गाइस मैंने पहले ही आपको बताया, हियर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर
जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, ये जो गाइज प्रूफ्रोक है ये अपने लास्ट टाइम में है यानी कि ओल्ड एज में है, एंड ही लेमेंट्स द कॉन्क्रेटाइजेशन यानी द मॉडर्न लाइफ स्पेशली बिकॉज इट इज नॉट हेल्पफुल, इट इज नॉट हेल्दी, सो ही लेमेंट्स दिस मॉडर्न लाइफ। सो आंसर हमारा क्या जाएगा, इट वॉज रिटन बाई टी.एस. एलियट, वन ऑफ द बेस्ट वर्क बाई टी.एस. एलियट। नेक्स्ट वी सी हियर, who was Andrea del Sarto, on whom Browning has written a dramatic monologue? So basically guys, Andrea del Sarto अगर हम देखें, he was a painter, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ए, a renowned painter। यानी renowned painter, if we see Andrea del Sarto, it means a painter without mistake, a painter without fault। ये आंसर हमारा यहां पे जाएगा renowned painter। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who was Fra Lippo Lippi, on whom Browning has written a dramatic monologue? So guys, Fra Lippo Lippi की अगर हम बात करें, he was also a renowned painter, तो आंसर हमारा क्या जाता है यहाँ पे, सी। So hope guys these questions are really beneficial for you people. So for some more questions, be connected with me. Thank you so much.